Hello students, hope you all are healthy and welcome once again to my class. This video is for class 7th and today we'll continue our chapter 4 of Civics, that is state government. So in this chapter we'll continue our topic members of a state functionaries. But before that I have given you some homework questions. Hope you all have completed. So let's discuss the answers of that questions. Answer the following in few words, short answers. First one question is, explain the composition of legislative council. And the answer is, the strength of the legislative council cannot be over 1/3 strength of the legislative assembly and not less than the number 40. However, it is never the final composition. The number of members in this unit is only finalized when the parliament approves. Now, the next homework question was, in order to become a part of the legislative assembly, what is the eligibility criteria? So, yesterday we discussed this in our previous class, that the eligibility required to be part of the legislative assembly are: be a citizen of India, second, should be 25 years old, must be a part of the constituency of the state. Now our next one homework question. Elaborate on the process of lawmaking step by step. And the answer is, the process of lawmaking step by step are: first, the draft of the bill of law is introduced either in the legislative assembly or in the legislative council of the state. After they discuss the introduced a law in the house, then they make an amendment. If they pass the bill, they send it to governor for the approval. After the sign of governor, the bill becomes an act. Now our next one homework question is, prepare a short note on governor. The governor is head of a state, just like the president, who is the head of the country. He or she is appointed by the president and hold the office for a term of 5 years. However, the president can remove the governor at any time. Also, the president can extend the term as well. Now, the last short answer is, the council of minister is the team of a minister who assist the chief minister in their work. Elaborate. So the answer is, the council of ministers is a team of ministers who assists the chief minister in their work. The council minister must be the members of the legislature. If they are not, they have to elect for the legislature within 6 months at the 3 state level. The 3 categories of ministers include cabinet minister, ministers of a state, and deputy ministers. Now let's continue with our topic, that is members of state functionaries. There are some very essential members of state functionaries that plays different role in the functioning of the government. So some members or some very essential members, means important members of the state functionaries who plays different role in the functioning of the government. So the first one is governor. So the governor is head of a state, just like the president who is the head of the country. जैसे कि president हमारे पूरे देश के हेड होते हैं, पूरे कंट्री के, वैसे ही गवर्नर पूरे स्टेट के हेड होते हैं. He or she is appointed by the president. Who appoints governor? Governor को कौन appoint करता है?
president and held the office for a term of 5 years। और गवर्नर का जो टेन्योर होता है, कार्यकाल होता है, कितने साल का होता है? 5 साल का। However, the president can remove the governor at any time। जबकि ये प्रेसिडेंट के हाथों में होता है कि वो गवर्नर को कभी भी हटा सकते हैं। अगर किसी तरह की इमरजेंसी हुई, किसी तरह के सर्कमस्टांसेस हुए, तो वो उनको हटा भी सकते हैं बिफोर 5 years। ऑल्सो द प्रेसिडेंट कैन एक्सटेंड द टर्म एज वेल। और उनका जो टर्म है या टेन्योर है उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो ये भी प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं। नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर बीइंग इलेक्टेड हैज़ टू फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर बीइंग इलेक्टेड, नाउ द फर्स्ट वन कंडीशन इज़ ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इंडिया का प्रेसिडेंट होने के लिए सबसे जो पहली कंडीशन है वो क्या है? ही और शी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। पहले तो वे भारत के नागरिक होने चाहिए। ही और शी शुड बी 35 years ऑफ एज और अबव। उनको 35 years के या उससे ऊपर का होना ज़रूरी है। ही और शी शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा। दूसरा, उनको लोकसभा का सदस्य होना ज़रूरी है। ही शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ अदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। साथ में पार्लियामेंट के किसी और हाउस के वो सदस्य नहीं होने चाहिए उसी समय पे जब वो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हों। ही और शी शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट। साथ में वो स्टेट के लेजिस्लेचर के मेंबर भी नहीं होने चाहिए। नाउ द पावर ऑफ गवर्नर इज़ लाइक द प्रेसिडेंट। जो गवर्नर की पावर होती है वो भी प्रेसिडेंट के पावर के जैसी ही होती है, बट एट द स्टेट लेवल। मीन्स द पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज़ एट national level or at the country level, but the power of governor is at the state level only. The governor appoints the government ministers such as chief minister, chairperson, advocate general and the members of the state public service commission. The first season of the state legislature opens with the governor's address। जो पहला सेशन होता है किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर का वो किसके एड्रेस के साथ? गवर्नर के एड्रेस के साथ शुरू होता है, उनके साथ ओपन होता है। प्लस अ गवर्नर हैज़ द पावर टू सेंड अ मैसेज और समन अ सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। साथ में गवर्नर के पास पावर होता है कि वो कोई भी संदेश या समन भेज सकते हैं जो भी हाउस का लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ पे। द बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर हैव टू बी एक्सेप्टेड। जो भी बिल, जो भी नया रूल या रेगुलेशन बनाया जा रहा है स्टेट के लिए, उसमें गवर्नर की एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। मीन्स ही और शी शुड साइन द बिल and this is must. So the bill is to be accepted and signed by the governor. If the state legislature is not in session, the governor can issue orders। अगर जो CM हैं या state legislature legislative assembly के जो speaker हैं या legislative council के जो भी head हैं, अगर वो नहीं हैं तो उस condition में गवर्नर अपनी तरफ से ऑर्डर्स इशू कर सकते हैं या किसी भी तरीके का इशू जो ऑर्डर वो इशू करते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑर्डिनेंस। दिस ऑर्डिनेंस विल बी वैलिड अंटिल 6 weeks। और ये ऑर्डिनेंस कितने टाइम के लिए वैलिड होता है? 6 weeks के लिए। आफ्टर द नेक्स्ट सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, बट द स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ द पावर टू अप्रूव इट और नॉट। The governor also has the power to reduce or suspend a sentence passed by the court under the state law। अगर राज्य स्तर पे स्टेट लेवल के पे कोर्ट ने किसी को डेथ सेंटेंस मीन्स फांसी की सज़ा सुनाई है तो उस पे भी या उसको भी सस्पेंड करने का जो पावर है वो किसके पास होता है? गवर्नर के पास होता है। Now our next one topic is Chief Minister, and this topic will continue in our next class. Till then you have to complete your short answers. The answers I have given in PDF, and you have to learn important terms of this chapter.
And don't forget to give your attendance in the comment section. Write down your class, your name and your section. Thank you, class.